in our today's online session for Standard 12 Statistics Part 2, Chapter number 2, Random Variable and Discrete Probability Distribution. Till now we have solved up to exercise 2.1, okay, where we have seen about the random variables. Mean equal to Ex, variance equal to Vx. Okay, that mean that variance is for random variable. Now coming to the next topic of this particular chapter, that is binomial probability distribution. Binomial 2. Okay. Here two variables, that is P and Q. So P plus Q equal to 1. Okay. The formula for binomial probability distribution is Px equal to NCx P to the power x Q to the power n minus x. कैसे यूज करना है we'll see afterwards. इसके प्रॉपर्टीज, इसके पैरामीटर्स जो वी कैन सॉल्व द इंपॉर्टेंट पार्ट, द पैरामीटर्स. इसके पैरामीटर्स है n और p. यहाँ पे मीन को बोलते हैं n into p, वेरिएंस इज n into p into q. स्टैंडर्ड डिवीजन मतलब अंडर रूट n into p into q. यहाँ पे हमेशा मीन का आंसर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू माय वेरिएंस. सो npq इज ग्रेटर देन np इज ऑलवेज ग्रेटर देन npq. सो यू वांट टू फाइंड द वैल्यू फॉर q, then npq upon np will get the value for q. If the answer for p is less than half, it is positive skewness. If the answer for p is more than half, it is negative skewness. If the answer for p is exactly half, it is called as symmetric. Okay. Coming straight forward to the exercise 2.2, number 1. For a symmetrical distribution with n equal to 8, px less than equal to 1. We got to find less than equal to 1 on the P0 and P1 we got to find. Okay. So symmetric means your P is half and Q is half. Your n is given as 8. Your P is half. Your Q is half. Okay. We got to find x less than equal to 1 means P0 and P1 we got to find. Okay. So first of all let us find P0. Your n is 8. 8C0. Let me write the formula first of all. Formula for Px equal to NCx Px Q n minus x. P0 8C0 1 upon 2 0 1 upon 2 8. 8 minus 0 that is 8. 8C0 1 power में 0 हो तो 1 upon 2 to the power 8 2 4 8 16 32 64 128 256. 256 that is 1 upon 256. Then P1 8C1 1 upon 2 1 upon 2 7 8 minus 1 7 8 into 1 upon 2 into 1 upon 128 that is 8 upon 256. Therefore 1 upon 256 plus 8 upon 256 that is 9 upon 256. Got the answer. Just to keep the values into the formula, nothing else is there. Number 2, mean of a binomial distribution is 5. Mean means NP. NP is given as 5. And its variance is equal to the probability of success. Variance means NPQ. Success means P. Failure means Q. Find the parameters for the N or P find करना है. Find the probability of event of getting none of the failures. मतलब एक भी failure मुझे find नहीं करना है. मतलब सबके सब success होने चाहिए. Okay. None of the failure for the distribution. Okay. Your NP is 5. So 5Q equal to P. 5Q मतलब 1 minus P is equal to P. 5 minus 5P equal to P. 5 equal to P plus 5P. 5 equal to 6P. 5 by 6 is equal to P. 5 by 6 equal to P. P plus Q equal to 1 होता है. Therefore 1 by 6 is equal to Q. मुझे बोला गया फाइंड करना पैरामीटर्स, तो आपको देखे रखा है NP is equal to 5. P क्या है 5 by 6 is equal to 5. Just wait a while. NP equal to 5. Just wait. You can try the sum. Your value for NP is given as 5, as we can see.
equal to 5 multiplied by 5 and P is 5 by 6 is equal to 5. Yeah, you don't know the value for n. Okay. So n equal to 5 multiplied by 6 upon 5. 5 cut. N equal to 6. Your P is 5 by 6. You got to find no failure, means all success. Okay. So Px equal to NCx Px Q n minus x. 6 is 5 upon 6 to the power 6, 1 upon 6 to the power 0. 6 is 6, 1. 6 to the 5 to the power 6, 5 into 5 into 5 into 5 into 5. 5 का आपको 6 टाइम मल्टीप्लाई आपके करना है, तो इसका आंसर है 15625. 6 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है. ओके, 6 into 6 into 6 into 6 into 6 into 6, 46656. पावर में 0 है तो 1 इक्वल 15625 upon 46656. Number 3. A person has kept 4 cars to run on the rent, means n equal to 4. The probability that any car is rented during the day is 0.6. Rent पे देता है वो 0.6 है. Find the probability that more than 1 but less than 4 cars are rented during the day. आपको n यहाँ पे देखे रखा हुआ है 4. रेंट पे देता है वो 0.6, तो रेंट नहीं देता वो 0.4. P plus 6 equal to 1 होता है. मुझे बोला गया है 1 से ज्यादा लेकिन 4 से कम, मतलब P2 और P3 मुझे फाइंड करना है. ओके, सो Px इज इक्वल टू NCx Px Qn minus x. सो पहले फाइंड करता हूं P2. 4C2 0.6 square 0.4 square 4C2 6. ओके, 0.6 का स्क्वायर मतलब 0.36 और 0.16. ओके, लेट अस सी. मल्टीप्लाई करने के बाद व्हाट इज माय आंसर? 0.3456. 0.3456. देन P3 फाइंड करते हैं. 4C3 0.6 क्यूब 0.41. 4 6 का 6 into 6 into 6, that is 216. 0.216 into 0.4, 0.3456. Therefore, P2 0.3456, P3 0.3456 equal to 0.6912. सम्स इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है. सिर्फ वैल्यू सबको पुट अप करना यहाँ पे आना चाहिए. नथिंग एल्स. नंबर 4 क्वेश्चन का आंसर पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. There are 200 farms in Taluka, among them bore wells made in these 200 farms of a Taluka. Salted water is found in 20 farms. Salted water 20 farms में है. Find the probability of the event of not getting salted water. Salted water है बोल दिया, हमें नहीं है वो फाइंड करना है. 3 out of 5 randomly selected farms from the Taluka. Okay, तो 3 out of 5 मतलब n आपको देके रखा है 5, x आपको देके रखा है 3. हमें पूछा गया है गेटिंग सॉल्टेड वाटर, ऊपर दिए नॉट गेटिंग सॉल्टेड वाटर, तो उल्टा दिया हुआ. सो उसको मैं q ले लेता हूं. सो 1/10 q, तो p आ गया मेरा 9/10. p आ गया मेरा 9/10. हमें फाइंड करना है Px equal to NCx Px Qn minus x. Okay, so 5C3 9/10 q 1/10 square. 5C10 9 का cube 9 and 81. 81 into 9, that is 729 upon 1000 multiplied by 1/100. 7290 1 lakh 0.729. 0.0729. Okay, sorry. 0.0729 equal to 0.07. हमने क्यों लिया? बिकॉज ऊपर दिया है गेटिंग सॉल्टेड वाटर, नीचे दिया है नॉट गेटिंग सॉल्टेड वाटर. ओके, ऊपर दिया है नॉट गेटिंग सॉल्टेड
सॉल्टेड वाटर और नीचे पूछा गया नॉन डर्टी, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे क्यू ले लिया। मुझे नीचे दिया हुआ जो क्वेश्चन है उसको लेके मुझे पी सजेस्ट करना है। ओके, पी मेरा आ गया 9/10। नंबर 5, लास्ट सम ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। An example is given to 6 students to solve. The probability of getting correct solution of the problem by any student is 0.6। 6 बच्चों का सम दिया है मेरे यहाँ पे, सॉल्यूशन सही आएगा, चांसेस है मेरे यहाँ पे 0.6। Students are trying to solve the problem independently. Find the probability of getting the correct solution by only 2 out of 6 students. Okay, n आपको 6 देके रखा है, x आपको 2 बोला है फाइंड करने के लिए। सॉल्व हो सकता है 0.6 तो नहीं हो सकता 0.4। ओके, सो px equal to ncx px q n minus x। सो p2 ही सिंपल फाइंड करना है, 6c2 0.6 square 0.4 to the power 4, 6 into 5 30, 30/2 that is 15 into 0.36, 4 4 is 16, 16 4 is 64, 64 into 4 that is 256, so 0.0256, let us multiply 15 to 0.36 multiplied by 0.0256, 0.13824, 0.13824, that's the answer for P2 is 0.138. As you can see, the exercise is very much easier. Okay, just you got to apply the formula properly, nothing else is there. Binomial distribution, it means ncx px to n minus x, where p plus q is equal to 1 होगा, q equal to 1 minus p, I can say. Okay, parameters आपको learn करने पड़ेंगे. Properties you got to learn, not the parameters. Properties you got to learn. So first parameters is n into p इसके parameters है. Okay, यहाँ पे मीन को np बोलते हैं, वेरिएंस को npq बोलते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन को अंडर रूट npq बोलते हैं. Okay, यहाँ पे मीन का आंसर हमेशा बड़ा होता है एज कंपेयर टू माय वेरिएंस। देन उसके बाद अगर पी का आंसर हाफ से कम है तो पॉजिटिव, हाफ से ज्यादा है तो नेगेटिव, हाफ है एक्चुअली तो सिमेट्रिक। फर्स्ट समय आप सिमेट्रिक दिया तो मैंने पी हाफ और क्यू हाफ ले लिया, एंड एट दिया पी एक्स लेस देन इक्वल टू 1 मतलब पी 0 पी 1 करना है, सिर्फ वैल्यू सबको पुट अप करना आना चाहिए। एन सी एक्स 8 से 0 1/2x मतलब 0, n माइनस एक्स मतलब 8 माइनस 0 दैट इज 8। इस तरीके से आपको सम यहाँ पे सॉल्व यहाँ पे करना है। Just put the values into the sum and then find the answers. Chapter is very much easier for you people. Just you have to keep on practicing the sums again and again. It is very easiest chapter. 10 marks are going to come from this particular chapter. Okay, as I already told in the previous lectures, 1 MCQ, 1 sentence, 1 2 marks sum and 3 2 marks and 2 sums of 3 marks. Okay, this way they are going to ask in the board examination. So I request you all कि जो एक्सरसाइज हम लोग यहाँ पे करते जाते हैं 2.1 we have already done with 2.2 is also complete now, so almost I can say the chapter is complete. Now only the final exercise left with, so you can even practice from the final exercise, try कर सकते हो आप, नहीं होता है वो बात अलग है। I am going to solve each and every sum on the board itself for you people, but I want that you also keep on practicing the sums before I solve in the board. Okay, so with this note, with the positive note, thank you once again. Have a nice day. Stay home, stay safe, and keep learning.